सुबह सुबह ये रश है। रश की वजह से स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मोटर बाइक, इतने ज़्यादा मतलब सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग इसकी सड़कों पे हैं, हनोई की सड़कों पे। तो हनोई वियतनाम का बहुत खूबसूरत कैपिटल है और पूरी दुनिया में इसका एक नाम, इसकी एक पहचान है। तो आज हम हनोई, इसके मज़ाफ़ात, इसके नवाह में वाक़या, इसके अंदर कुछ जो दिलचस्प इंटरेस्टेड लैंडमार्क हैं उनको हम विज़िट करेंगे। और उसकी हमारे साथ ये वैन है। वैन के अंदर कुछ और भी विजिटर हैं जिन्होंने ये सर्विस बुक कराई है, और हमारे साथ ड्राइवर हैं, और फिर हमारे साथ एक टूरिस्ट गाइड हैं कंपनी की तरफ से, जो हमें मुकम्मल और जामिया मालूमात पहुंचाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं जहाँ जहाँ मैंने समझा कि आपके लिए दिखाना ज़रूरी है, वो मनाज़र बाकायदा तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। शुक्रिया। ये देखें जी, सामने तारा चन्ना, ये यहाँ के मशहूर चौक में रेस्टोरेंट है। और ये भी एक, इनकी सुबह की ट्रैफिक को देखना हो तो इससे बेहतरीन वक्त शायद नहीं हो सकता। ये इनके सुबह सुबह जॉब शुरू करने से पहले कप ऑफ कॉफ़ी या चाय का कप लेना, ये यहाँ का रिवाज है और सकाफत है। चाय का, काफ़ी तो इधर का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन चाय जो है इनकी वियतनाम, चाइना, जापान, कोरिया और इन सभी कंट्रीज़ की वो एक ट्रेडिशन है, एक सकाफत है, उनकी एक रवायात में से शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब वराइच ऑफिशियल और मैं मतलूब वराइच आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं निकला हूँ एक टूर पे, और इस टूर को 7 टूर कंपनी वियतनाम के शहर हनोई में उन्होंने अरेंज किया है। इसमें वो कुछ की पॉइंट, कुछ लैंडमार्क में दिखाएंगे शहर के, और कुछ तारीख़ी चीज़ें भी हमें दिखाएंगे, ट्रेडिशनल भी, और इसमें की जिद्दत और नई चीज़ें वो भी देखेंगे। तो ये एक बड़ा अहम टूर है मेरे लिए। मैंने काफ़ी देर से सोचा था कि वियतनाम जिससे एक तारीख़ वाबस्ता है उस शहर को ज़रूर देखेंगे। तो चलते हैं, अपने टूर का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से करते हैं, और इसको मज़ीद जहाँ जहाँ ज़रूरी बताया गया वहाँ वहाँ इंशाल्लाह उसको कैप्चर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे फुटेज को, और आप तक मालूमात पहुँचाएँगे। thì nó vẫn là trục đường đấy thì nhá. Bạn đấy làm bồ chứ này. Bạn anh nói thế là ý nó là phải vòng ra tận Đinh Liệt để vòng vào, anh hiểu chưa? Đấy chả liên quan gì hàng vào gì cả. Hàng bạn vẫn thẳng sang hàng bồ đấy đúng là không? bồ. Anh nói thế này thành đi vòng ra Đinh Liệt để anh kéo. ये दिखाने का जी मकसद ये है कि शहर का कल्चर आपको दिखाएं कि ये लोग अपने सुबह शाम क्या करते हैं, इनकी अदात व फ़साइल क्या है। ये एक और चौक आ गया जी, ये भी खूबसूरत चौक है बिल्कुल।
और इसमें आप देखें होटल बहुत ज़्यादा हैं इधर, टूरिस्ट करोड़ों में इधर जो है वो आते हैं पूरा साल। गर्मी के सीज़न में थोड़ा कम होता है, लेकिन अब ये फुल जा रहा है। अक्टूबर का है तकरीबन, आज आखिरी डेट है, तो ये इस वक्त इनका हाई सीज़न शुरू हो गया है। क्योंकि जब इधर सर्दी होगी, थोड़ी सर्दियाँ होनी शुरू होंगी, तब यूरोप के लोग ज़्यादातर इधर आके यूरोपियन टूरिस्ट इसको फोकस करता है। और इसके लिए तो ये देखिए अभी सुबह 8 बजे है और सारी दुकानें खुल चुकी हैं। जबकि अब पाकिस्तान देखें तो हमारे लाहौर में 11-12 बजे के बाद दुकानें खुलना शुरू होती हैं और मुतअद्दिद प्लाज़े, मुतअद्दिद मॉल खाली पड़े होते हैं, मतलब देर से रवाज है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का ज़्यादा ख़र्चा, ज़्यादा इस्तेमाल इसका मौजब बनता है। तो कौमें सीखती हैं, कौमें पे अमल करती हैं, कौमें अपने इरादों से पहचानी जाती हैं। ये वो कौम है जिसने, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जिसने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को उसके अरूज में ना सिर्फ शिकस्त दी, ना सिर्फ उस जंग में हराया, हाँ मिलियंस ऑफ लोग यानी लाखों लोग इसके शहरी मारे गए, लेकिन इन्होंने भला आखिर उस सुपर पावर का तलस्सम तोड़ दिया और वो सुपर पावर इधर हज़ारों, बल्कि अगर आप लाखों में भी इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, अपने हज़ारों फौजी मरवा के लाशें छोड़ के भागा। और आज उनके अबा, उनके या उनकी आने वाली नस्लें, उनकी औलादें या जिनके वो रिलेटिव थे, वो लोग आज सिर्फ अपने उन फौजियों की बाकियात उनकी कब्रों पे प्रेयर के लिए आते हैं। तो ये उनका टूरिज़्म बन चुका है वियतनाम का, कि जिन्होंने इनसे मार खाई वो आज इनके पास आ रहे हैं अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए, अपने प्यारों को जो बाकियात हैं या उसे देखने के लिए। And from here to the first place today, only the 6 or 7 minutes. We go to the first place today. And now just could you give me a few minutes? I want to introduce with something about myself. And I want to tell everybody something about the schedule today. The program today for all of you. Okay? Yeah. But at first, on the behalf of our company, thank you very much for joining with us today. Go to the tour in Hanoi. And we hope that everybody have a good trip today in Hanoi. Okay? Yeah. And now something about myself first. Sorry. I think it's most of the people I send a message. Yeah. You know my name, right? Some of the people answer me. Some of the people maybe still sleeping, not answer me. But you read my message. You know my name, right? Yeah. S-O-N. Yeah. Sun. In Vietnam, sun means a mountain. If one can call me the mountain, it's okay. Sun on a mountain, no problem. You know. Do you know that before becoming a tour guide, I studied in Hanoi. I studied English and tourism. And now I has been a tour guide for more than đi thẳng đi đây á. And do you know that I told you I was born near the mountain, my homeland on the way from Hanoi to Sapa. You know Sapa in Vietnam, right? Yeah. And because I was born mountain, why my birth name is us. If you feel the mountain easy for you, then call me the mountain, it's okay. So the mountain, no problem. Yeah. I've been to the everywhere on the way. You want to ask me anything, you're welcome. I'm very happy to answer all of you. Okay? Yeah. And don't forget one of the most important guy today on our bus, our driver. Yeah, you don't need his real name, his nickname, the Fast and Furious.
Because I told he the front and furthest, some of the people want to stay in front chair over here. He stay in my VIP chair here. He paid for me $10 for stay there. But please want to sit down if the police catch you. Yeah. Only the $45. You don't want to sit down, stay in front chair. Be careful with the police, okay? And today we are very happy to serving all of you go to the city tour today. And we hope that everybody have a good trip today in Hanoi, okay? Yeah. And from here to the first place, already the view, okay? Yeah. In the morning, the first place of us, we take her to go to see the very famous Buddhist temple in Hanoi. It's called the Tran Quoc Pagoda. That is the oldest Buddhist temple in Hanoi. Now, yeah. After the Tran Quoc Pagoda, the bus will take her to go to the Ho Chi Minh complex. Ho Chi Minh complex, we have a chance to see the Ho Chi Minh mausoleum. I mean the tomb for the Ho Chi Minh, to see the real body of Ho Chi Minh inside. We come inside the garden to see the President Palace, my future house. Okay? To see the house for the President Ho Chi Minh, to see the 1 meter pagoda, very big area. 1 hour, 30 minutes walk inside. You can get some more information about the British leader in Vietnam in the 20th century Ho Chi Minh. After so many walk inside the Ho Chi Minh complex, all the tour of our company we have a chance for resting to see the very, very famous workshop in Hanoi. Resting over there 20-25 minutes before we keep going go to visit a museum of ethnologies. The Museum of Ethnologies, you can get some more information about the different ethnic group in Vietnam, And after the Museum of Ethnologies of us, we take a bike, go to the old water, we go to the restaurant to lunch, And after the lunch in the afternoon, we have 2 more places to see. First of us, we take a quite famous temple in Hanoi. The people that call the temple of the literature. I mean the temple for the Confucius. And that's one that is the first college, the first university in Vietnam. And after the temple of the literature, we go to the one more place. We go to the Warraich prison. That is a prison for the Vietnamese political prisoner during the French colony, and the prison for the American pilots during the Vietnam War. And after the Warraich prison, the bus will take us back to the hotel. And normally the city tour will finish around the 4 o'clock. Yeah, the tour will finish. Sometime earlier, sometime later, depends the traffic. Depends how long the line inside the complex, and depends how fast our driver today. And remember, the city tour is the walking tour. Every 10 minutes, we stop and walk. We walk from now until to the 4 p.m. Try to save the energy. And the program I want to tell everybody. Do you get it? Anybody clear? If you're still wondering something, not clear anything, you can ask me. I'm very happy to answer all of you. Okay? Yeah. Do you get it? Yes. And in order to make a good service on the tour, one more question I want to ask all of you. The food in the restaurant, there is a set menu. On the menu, have the fish and chicken. And I want to make sure in our group, anyone a vegetarian, veggie? Really? When I ask a veggie, I see some of the Indian family. Nobody veggie? No. Veg, right? No. Fish okay, chicken okay, right? Yeah. The family over there, fish okay, chicken okay, right? Yeah. What? Allergic what? Seafood. Seafood. And it is meaning don't eat fish, right? Chicken okay, but no fish. Only you, right? That's okay. Yeah, easy. Yeah. Only the one person don't eat fish, but chicken okay. But the rest of group okay with the fish and chicken, right? Yeah. All right. Yeah. Easy group today. And from here to the first bed, only the 2 minutes we go to the first bed today. You see on our group a lot of different group on the bus. We have a chance to see so many places today. Every place, anybody follow me. Stay around me. Give me the time I talk first. And no worry after that. You want walking around photography by yourself, easy for all of you. Okay? Yeah. 2 minutes we go to the Tran Quoc Pagoda. Yeah, thank you. Yeah. Cắt luôn tiền ăn của mày béo hả? Gì gì
हम झील के तरफ आए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत एरिया है, कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ टूर गाइड अपने विजिटर्स के साथ उनको दिखा रहे हैं। और ये देखें क्या खूबसूरत मनाज़र हैं, झील है, नीलगुम पानी है और उसके किनारे आबाद ये हनोई शहर वियतनाम की एक दास्तान रकम कर रहा है। और ये हम इसमें दाखिल हो रहे हैं। Ladies and gentlemen, as I told you before, every place just give me the time. Little bit, I give you some of the main information first. And no worry, let I keep the time for the body photography inside here. Okay. And now I want to tell the body something about this pagoda. The people they call this one that is the Tran Quoc Pagoda. Tran Quoc. Tran is mean the protect. Quoc is mean the nation. Tran Quoc is mean the protect the country or the save the country. This pagoda that is the oldest Buddhist temple in Hanoi. Follow the document. This pagoda was built in the 6th century. 6th century means the pagoda 1,500 years old. But you know that because of the war and the time, everything inside was rebuilt and restored, you know. And the Tran Quoc Pagoda located inside a very famous lake in Hanoi. The people they call this one that is the West Lake. The West Lake that is the biggest lake in Hanoi. Follow the document. The total area of this lake about the 600 hectares. The road around the lake about the 18 kilometers, and this one the biggest lake in Hanoi. Back to the pagoda. This pagoda was divided into the two main parts. Now we are inside the first part. The first part, the first thing I want to show everybody, we have a chance to see the very famous tree inside the pagoda. As in India, they call this one the people tree. Yeah. But in English, they call the Buddha tree, a banyan tree. Very famous the tree inside the pagoda. The tree that come from the Masa holy tree from the India. Follow the legend, one Buddha, Sika Amuni. He seated under the tree. And the tree was planted by the first Indian president came here in 1959. Prasad, first Indian president, he planted the tree over here. And now the tree around 65 years old now. You know. Inside the pagoda over there, we have a chance to see a lot of statues inside. Most of the statues in the center dedicated to the Buddha. On the top level, in the center, that is the Sika Amuni, is the main Buddha. Under Sika Amuni, they call the Asida. Asida, yeah, like the follower of Sika Amuni. Under Asida, they call the Happy Buddha. The Buddha has a big belly. Happy Buddha. Under Happy Buddha, they call the Lady Buddha. The Buddha with so many hands to help the people. It's a main Buddha in the center. Two sides of the main Buddha, you see some of the smaller statues two sides. The people, they call that one that is the follower of the main Buddha. And sometimes you see some of the statues look like the human being two sides. The people, they call the landlord. I mean the God to control the land. The God to control this area. Yeah. And one more thing when you come inside here on the left hand side, on the wall, you see a lot of small pictures on the left. That is the picture of the dead people. They are the local people stay around here. When they die, the family they took the picture over here. When the people come here pray for the Buddha, they pray for the dead people. So when the dead people stay close to the Buddha. Yeah. Another side on the wall, this side, you see another photo on the wall. The photo on the right hand side for the famous visitor. When they come to visit the pagoda,
the monk they put photo for the famous people on the right hand side. Yeah. For example, like the former Russian president came here in 2010. His picture on the right hand side. 8 years ago, very famous football team from the England, the Arsenal team. The whole team came over here. The picture for few the player on the right hand side. I think you know the football club from England, right? Arsenal, right? Yeah. And now keep the time for the body about 10 minutes. Come inside, have a look, taking a picture a little bit. And after that, we come back over here before they go to the second part of the pagoda. But remember, come inside, must take off the shoe when you come inside. Okay? Do you get it? Yeah. And now time for photography. Come inside, have a look, picture a little bit. And after that, we come back over here. Do you get it? Yeah. Thank you. Yeah. Now time for photo. Right? When they cremate the body, they burn the body, they put the earth inside here. The tower, that is the tomb of the monks. The garden tower, that is the cemetery. Yeah. Inside the second part of the pagoda, you see a lot of statues inside. Most of the statues in the center for dedicated for the famous monk. When a very famous monk died, not only to cremate the body, to put the earth inside here, but also they make some statue for them in the center. I mean, most of the statue in the center for the famous monk. On the right hand side, you see some of the statue for some of the lady. In Vietnam, they call the Holy Lady. That is the local religion for the Viet people. The Viet people, besides pray for the Buddha, they pray for the Holy Lady. For example, under the tree over here, you see the one statue for one the lady under the tree. Can you see it? They call that's one the Lady God of the sky, Lady God of the heaven. And later, when you come inside, another side, you see the one more statue for one more lady. They call that's one that is the Lady God of the mountain. The Lady God to control all the mountain in Vietnam. And the whole this area they call the Garden Tower for the famous monk and for the Holy Lady. And the Garden Tower, very good place for photography. One of the best spots is you're taking a picture of the Garden Tower. Later you should stand somewhere over there. See some people standing? We have a chance to see the whole view of the tower. That is the best place for photography. Okay? And now also another 10 minutes walking around here for photography a little bit. Before go back to the bus, go to the very big area, the Ho Chi Minh complex. Okay? Yeah. I'll photography a little bit. Yeah. ये देखें ये बुद्धा के ये 3 स्टैचू, ये 3 फॉलोअर थे उसके, और ये एक बुद्धा का बड़ा मीनार। तो ये कुतुब मीनार की तरह या फैसलाबाद के घंटाघर की तरह पे ये या वो इसके तर्ज पे बना है, क्योंकि ये तो बहुत सदियों पुराना इसका रिकॉर्ड है। ये देखें, ये आर्सेनल की फुटबॉल टीम के वो प्लेयर हैं जिन्होंने इस बुद्धा टेम्पल का विजिट किया था। ये मतलब प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट थे, और ये सब देखो। ये जी बुद्धा के एक जैसे खलीफा होते हैं आगे, इस तरह एक फॉलोअर थे बहुत मशहूर उनकी। ये देखें जी, इस ताज़ा मछलियाँ इस दरिया से अभी उन्होंने पकड़ के बाहर निकाली हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फिश मछली पाई जाती है। ये देखिए, ये उन्होंने पकड़ी है, कैच की है। ये जी लेडी बुद्धा थी। तो ये उनके
देखने इन्होंने ये लेडी बुद्धा भी तख्लीक की, और या वो थी तो उसका भी यानी पैर को बनाया बुद्धा और लेडी बुद्धा। ये लेडी बुद्धा की उसकी देखें शादी की जोड़े में, और ऊपर आप पीछे देख सकते हैं 2 खवातीन, ये लेडी बुद्धा थी। तो Filler. Relleno. Relleno. de relleno, de fill. Yeah. और ये देखिए उसका, ये भी बुद्धा की, ये टेंपल यहाँ पे लेडी टेंपल, लेडी बुद्धा टेंपल के नाम से मशहूर है, और इसकी साल भर लोगों की एक कसीर तादाद इसे देखने आती है, अकीदत के फूल चढ़ाते हैं, नजराने पेश करते हैं। इस तरह ये बुद्धा रिलीजन, ये बुद्धा मज़हब एक्चुअली दुनिया का सबसे पुराना मज़हब माना जाता है, जो 4-5 हज़ार साल से भी ज़्यादा इसकी तारीख़ है, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों और लाखों साल पुरानी इसकी तारीख़ बताई जाती है। तो ये दुनिया का सबसे इस वक्त भी मज़ाहब में, हम इस्लामी तौर पे नहीं कहते, लेकिन वो जो दुनिया में इस वक्त पाए जाते हैं मज़ाहब, उनमें बुद्धा सबसे ज़्यादा इसकी तादाद भी है दुनिया भर में। दूसरे नंबर पे क्रिश्चियनिटी है, तीसरे नंबर पे मुस्लिम है। तो लेकिन मुस्लिम सबसे आखिर में आने के बावजूद इस वक्त क्रिश्चियन के तकरीबन बराबर हैं, या 19-20 का कोई फ़र्क होगा। लेकिन बुद्धा जो है ये दुनिया भर में, मतलब चाइना, जापान, फिलिपाइन, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सारी कंट्री और भी बेशुमार मुल्क जो है वो बुद्धा के, चाइना नेचुरली, और इंडिया में भी एक बहुत बड़ी तादाद, तिब्बत, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया में बड़ी तादाद जो है 40% के करीब इसके मानने वाले, बुद्धा के मानने वाले पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से ये कहना कि इनकी एक तारीख़ है।